Hello everyone, I am Shraddha Agrawal, PGT Maths from KVCMM Jabalpur. Welcome in my video session. This is differential equation. Okay, we will discuss about differential equations. In today's session, we will learn what is differential equation, order and degree of differential equation, general and particular solutions, and formation of differential equation whose general solution is given. Okay, so children, you know that what is equation. Okay, already you have studied some special types of equations like linear equations, quadratic equations and trigonometric equations ना. आपने ये सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है. इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस ये भी आपने पढ़ा हुआ है. ओके, सो हम यहाँ पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसी टाइप से ही कुछ इसमें भी होगा. जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, बाय द नेम आप इसमें लेते हैं कि इक्वेशंस इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, तो सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन भी ऐसा ही कुछ होगा जिसमें डिफरेंशियल्स ना, जो टर्म इसमें मेन ले रहे हैं डिफरेंशियल. तो डिफरेंशियल आपको पता होगा, जो आपने पहले के प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स, जो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, तो इनसे रिलेटेड ही जो टर्म्स हैं इसमें आगे होंगी, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे. सो द टर्म डिफरेंशियल दैट इज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेसन that derivative of function with respect to independent variable. Also we know that the derivative is represented as f dash x or dy by dx, where y is equal to fx. Okay, now this derivative dy by dx, it is called the first order derivative. dy by dx is the first order derivative. If we again differentiate this dy by dx with respect to x, so what we write, it will be d2y by dx square. It is called second order derivative. Okay, now again differentiating with respect to x, so it will be d3y by dx cube. So all these notations we will use later on, dy by dx, d2y by dx square and so on. Okay, now what is the need of differential equation? कैसे ये derive हुआ, कैसे differential equation हम use करते हैं, क्यों हम use करते हैं, तो उसके लिए हम एक example लेते हैं. Suppose we have an example that suppose a ball is falling towards ground through water. Okay, taking an example, that is a ball is falling through the water and we have to find the velocity of the ball. Okay, now we know that velocity of the ball will changes. जैसे जैसे बॉल नीचे आती जाएगी उसकी velocity जो है वो change होगी. And you know that the change in velocity is called acceleration. Okay, so the ball's acceleration is equal to dv by dt, where v is the velocity. Clear? Now अब ये बॉल जैसे जैसे धीरे नीचे आती जाएगी ग्राउंड की तरफ, तो वेलोसिटी चेंज होगी ड्यू टू वाटर रेजिस्टेंस, क्योंकि वो थ्रू वाटर आ रही है. ओके, सो हम यहाँ कंसिडर करेंगे ओनली ग्रेविटी एंड वाटर रेजिस्टेंस. सपोज द बॉल वेलोसिटी इज चेंजेस ड्यू टू ग्रेविटी एंड वाटर रेजिस्टेंस. Okay, now considering the gravity as constant g and water resistance उसको just आपको पता है कि it is proportional to the velocity. So suppose it is equals to kv. v is the velocity and k is a constant. Clear? So the change in velocity, बॉल नीचे की तरफ जैसे जैसे आएगी तो उसमें ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू वाटर रेजिस्टेंस जो चेंजेस आएंगे उसको हम लिखेंगे एक्सेलरेशन. बॉल्स एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द ग्राउंड विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू वाटर रेजिस्टेंस. ओके, and also we have already find dv by dt, acceleration, change in velocity. So keeping these two things are equal,
So we can write dv by dt is equal g minus kv. Using this equation we can find the velocity of the ball, and you can see here the derivative of v with respect to t is used in this equation. So this equation involves the derivative, hence it is the differential equation. Okay, it is the differential equation where we have to find the velocity v. Okay, so it is the real life problem that how to generate a differential equation, and using this law we can find, using this equation we can find the velocity. So finding the velocity as a function of time means involve, आगे हम पढ़ेंगे कि इस कैसे हम इस differential equation को solve करेंगे. So solving differential equation, that is finding the velocity of function. Now we have the proper definition of differential equation. An equation involving derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. For example, x dy by dx plus y equals to 0. Here y is the dependent variable and x is independent variable. Dy by dx is the derivative of y with respect to x. So this expression involves derivative of dependent variable with respect to independent variable, hence it is differential equation. Clear? Let us have another example. d2y by dx square plus y equals to 0. Another example, d3y by dx cube plus sine of dy by dx plus y equals to 0. You can see that in the second example we have used a second order derivative, and in the next example we have used the third order derivative, also first order derivative. Similarly, other examples are given. Now we should know about the types of differential equation. Here ordinary and partial differential equations here. We should know the ordinary and partial differential equations. A differential equation involving derivative of dependent variable with respect to only one independent variable is called ordinary differential equation. ऐसा differential equation जिसमें derivative जो है वो सिर्फ एक ही independent variable को रखा है, सिंगल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो dy by dx रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ x एक ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस हमारे चैप्टर्स में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ेंगे. ओके, differential equation involving derivative of more than one independent variable is called partial differential equation. In that case we write the symbol, we use the symbol del y upon del t or del x by del t. Okay, del y by del t or del x by del t. This shows the partial differentiation. Here we can say t is an independent variable as well as x is also an independent variable. And partial differential equation जो है हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है. अभी हमारे सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ही है. Okay, now come to the main part of our syllabus. Order of differential equation. ऑर्डर से मीनिंग, यहाँ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जस्ट मीनिंग ये है कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसमें जितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर शो करेगा. फॉर एग्जांपल d3y upon dx cube plus dy by dx plus y equals to 0. It is a differential equation. And in this differential equation it has third order derivative d3y by dx cube. So the order of this differential equation is 3 because the highest order derivative is
3. So the order of this differential equation is 3. Now degree of differential equation. Degree of the differential equation means degree of the highest order derivative if it is a polynomial equation in derivatives. This is the most important part of finding the degree of differential equation, that is given differential equation, जो भी हमारा differential equation given है, that should be a polynomial in derivatives. You very well know that polynomial. So अगर नहीं है तो एक बार हम इसको polynomial को भी रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं polynomial क्या होता है. A mathematical expression of one or more algebraic terms, each of which consists of a constant multiplied by one or more variables raised to a non-negative integral power. Here the most important part is non-negative integral power. ओके, मीन्स जो वेरिएबल है, वेरिएबल जो भी एक्स वाई समथिंग है, उसका पावर एक्सपोनेंट जो है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल. फॉर एग्जांपल वी हैव 3x³ माइनस 5x प्लस 2. यहाँ हम देख सकते हैं x की जितनी भी एक्सपोनेंट्स हैं ये सब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है. x³ 3, यहाँ x का पावर 1. बट इन दिस केस x प्लस रूट x माइनस 2, हियर वी कैन सी x raised to 1 by 2. This is x raised to 1 by 2. So it is a fraction. Okay, so it is not a polynomial. Similarly, in this case 1 plus x plus 1 by x cube. 1 by x cube will be x raised to minus 3. So it is negative. So hence it is not a polynomial. Okay. So we have to find the degree of this differential equation. We can see the highest order derivative. इसमें सबसे ज़्यादा जो second order derivative present है यहाँ, and its exponent, इस second order derivative का जो exponent है वो आप लिख रहे हैं 1. So its degree is 1. Okay. Now in that second case d3y by dx cube plus root over dy by dx plus y equals to 0. आप यहाँ इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं बिकॉज हियर द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 3. बट इन केस ऑफ डिग्री, जब हमें डिग्री फाइंड करना है तो आप देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये आपका dy बाई dx में पॉलिनोमियल होना चाहिए. dy बाई dx में पॉलिनोमियल मीन्स द डिग्री ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ dy बाई dx शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल. ओके, so it is not a polynomial, hence its degree is not defined. Clear that? So if order and degree of any differential equation is defined, so it will be a positive integer. Okay, now we have some examples. We have to find the order and degree of the given differential equation. Suppose we have differential equation d3y by dx cube plus 2d square y by dx square whole square minus dy by dx plus y equals to 0. Okay, we have to find order and degree. So you can see that the highest order derivative in this equation is the third order derivative. This is the third order derivative. So this gives the order of differential equation. Hence we have order of differential equation is 3. And what about degree? Degree find करने के लिए it should be a polynomial. तो आप देख सकते हैं derivative, exponent का जो derivative है, here it is 1, here it is 2 and here it is 1. So in that case it is a polynomial in dy by dx. So its degree is defined. Now degree is defined, and what will be the degree? Highest order derivative has exponent 1, so its degree is 1. Clear? So order is 3 and degree is 1. Now we have the second example, d3y by dx cube plus sine of dy by dx plus y equals to 0. We can see that here the highest order derivative is 3.
So the order of differential equation is 3. Clear? But in case of degree, we can see it is not a polynomial. Why it is not a polynomial? Because the derivative term is along with sine. Sine function, cos function, log function, किसी के साथ भी अगर आपका derivative include हो रहा है, so it is not a polynomial. It should be an algebraic expression. Okay, so it is not a polynomial, hence degree of this differential equation is not defined. Degree of this differential equation is not defined. Okay, so let's have some questions. Find order and degree of the following differential equations. You have to solve in notebook. First one is d2y by dx square whole raised to 5 plus log of dy by dx plus y equals to 0. What about the order of this differential equation? You can see the highest order derivative is 2. So order of this differential equation is 2. But is it a polynomial? No, it is not a polynomial in dy by dx. It is not an algebraic expression, so it is not polynomial, hence its degree is not defined. In the second question, you can see that highest order derivative. What is the highest order derivative? Here the highest order derivative is the fifth order derivative. So order of this differential equation is 5. Okay, and what about degree? Is it a polynomial? Yes, it is a polynomial in dy by dx. So its degree is equal to the exponent of highest order derivative. So in this case, degree is 3 and order is 5. Now similarly in third question, now it is easy for you. Order is 2 and degree is 1. Okay. Now we come across the solution of differential equation. What do you mean by solution of differential equation? In general, solution of any equation means value of variable that satisfies the equation. So in case of differential equation, the function which satisfies the given equation is called solution of that differential equation. Okay, so we can check by an example. Suppose we have function y equals to sin x. Okay, we have to check, is it it is a solution of this differential equation d2y by dx square plus y equals to 0. Okay, so in order to check y equals sin x is a solution of the given differential equation or not, we have to find the derivative. Okay, इस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है, जो रिक्वायर्ड है, वो फाइंड करना है आपको. मीन्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx by equals sin x, so dy by dx is equals to cos x. बट यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट d2y by dx square is minus of sin x. Clear? So values of d2y by dx square and value of y will be substituting in the given differential equation. We get left hand side minus sin x plus sin x, and that is equals to 0, which is equals to right hand side. Okay, so we can see the y equals sin x satisfies the given differential equation. Clear? जो फंक्शन उस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा, सो इट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो वी शुड नो अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के? फर्स्ट वन इज जनरल सॉल्यूशन. क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? देखते हैं.
अभी हमने जो क्वेश्चन लिया जिसमें हमने लिया y इक्वल्स साइन एक्स, y इक्वल्स साइन एक्स, और हमने चेक किया कि इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सपोज अगर हम एक दूसरा फंक्शन लें y इज इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ x प्लस 1। ओके, अब ये चेक करना है कि क्या ये भी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो इसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं y इक्वल 2 साइन ऑफ x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करें। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी, क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स 2 cos x प्लस 1। Okay, again differentiating, so we get second order derivative is minus 2 sin x plus 1, and जैसे हमने previous question सॉल्व किया वैसे इसमें पुट कर देंगे जब, तो आप देखेंगे कि it satisfies the equation। Okay, now similarly taking y equal to 3 sin x minus 5, अब हमको चेक करना है कि क्या ये भी इसी का सॉल्यूशन है। आप सेम चेक कर सकते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी 3 cos x minus 5 एंड सेकेंड डेरिवेटिव विल बी माइनस 3 sin x minus 5, और जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो यू कैन सी दैट इट satisfies the given equation। So is it surprising? Okay, कई सारे ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं जो सेम एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और क्या चेंजेस हैं इन फंक्शंस में, हम क्या चेंजेस देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट द साइन फंक्शन इज सेम, फंक्शन साइन फंक्शन आपका सेम है। सो सिर्फ मल्टीपल चेंज हो रहा है, साइन का जो मल्टीपल आपको यहाँ मिल रहा है दैट इज चेंजिंग। इन जनरल वी कैन सी y equal a sin x plus b is also solution of this differential equation। सेम प्रोसेस आप इसको चेक कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करिए, पुट करके देखिए, इट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन y equal a sin x plus b, this type of function satisfies the differential equation d2y by dx square plus y equals to 0. So hence it is called the general solution. It is called the general solution of given differential equation, and where a and b are constant, arbitrary constant. तो हम जनरल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? The solution which contains arbitrary constant is called general solution। ये ध्यान रखिएगा, जिसमें भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होंगे हम उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। ओके, सो फर्स्ट वन इज जनरल सॉल्यूशन। नाउ सेकेंड वन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। ऐसा इक्वेशन फंक्शन जिसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं होगा उसको हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बाय नेम ऑलरेडी क्लियर हो रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स वो एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये पर्टिकुलर एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल फंक्शन। सो इट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, as it is not containing any arbitrary constants। Clear? Now we have to form differential equations. Next our topic is formation of differential equation whose general solution is given। Okay, so what is the process? Suppose we have equation x square plus y square equals to r square। बता सकते हैं ये किसका इक्वेशन है? x square plus y square equal r square। It is the equation of circle whose center is 0, 0 and radius is r। Clear? Equation of circle whose center is 0, 0 and radius is r। Okay, so for different values of r
It represent circles, different circles. Suppose we have r equals to 1. r equal 1 के लिए आपको ये एक सर्किल मिल रहा है. r equal 2 आप लेंगे सेकेंड सर्किल. r equal 3 के लिए आपको थर्ड सर्किल. मीन्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r we have circles whose center is origin. Clear? That means this equation represents a family of concentric circles. Okay, it is the family of concentric circles whose center is origin and having different radii. So we have to find the differential equation. इसके लिए आपको एक differential equation find करना है. Okay, अब जब हम इसका differential equation find करेंगे so it should be free from r. जो differential equation है वो r जो constant है उससे free होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? Because r is different for different members of the family. r हर एक के लिए अलग अलग है. तो अगर differential equation में भी r आएगा तो वो एक सभी के लिए आंसर रिप्रेजेंट नहीं करेगा, है ना. सो वी हैव टू एलिमिनेट दिस आर्बिट्री कांस्टेंट r को हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है. इजीली एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंटली ऑन द राइट हैंड साइड. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2x plus 2y, derivative of 2x square is 2x, derivative of y square is 2y dy by dx और equals to r square का derivative हो गया 0. or we can write x plus y dy by dx equals to 0. So it is the differential equation, required differential equation. That means this represents the family of concentric circle given by equation 1. Clear? Now let's have another example. Suppose we have y equals to mx plus c. बता सकते हैं किसका इक्वेशन है ये? Yes, equation of straight line. Okay, that means for different values of m and c, it represent the family of straight lines. ओके, एम और सी की जितनी जितनी वैल्यूज़ होती जाएंगी उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेट लाइन जनरेट कर सकते हैं. सो वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी इज अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. दैट मीन्स टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ एम एंड सी. अब हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना है उसमें ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स नहीं होने चाहिए. ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम. ओके, बट अभी हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया है तो इसमें तो आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है. हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो इन दैट केस द आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो हमारा एलिमिनेट हो गया. सो d2y by dx square equals to 0. दिस शोज द डिफरेंशियल इक्वेशन. इट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स which is given by equation 2 means y equal mx plus c. Okay, now we conclude that differential equation is formed by eliminating the arbitrary constant with the help of derivative and the given function. हमको किसी भी फंक्शन के लिए जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है so we have to eliminate the arbitrary constant. ओके, ऑल्सो प्रीवियस एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही था. सो वी हैव डिफरेंशिएट ओनली वंस. इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स आपके 2 हैं. सो आपने यहाँ 2 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट किया है. सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर डिफाइंड होगा. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू number of arbitrary constants. Now let's have example. We have to find the differential equation of the family of parabolas. y square equals to 4ax. बता सकते हैं इसमें कितने arbitrary constant हैं? only one arbitrary constant है यहाँ. So we have to differentiate it only once. एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको. y square equals to 4x, differentiating with respect to x, so we get 2y dy by dx is equal to 4a.
बट अभी भी ये कांस्टेंट हमारा एलिमिनेट नहीं हुआ है. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4a इन द गिवन इक्वेशन, और ये 4a का जो वैल्यू है उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x by dy by dx, or we can write t dividing by y, so it is y equal to 2x dy by dx. It is the required equation. Again, having family of straight lines, x upon e plus y upon b equals to 1. You can see that here we have two arbitrary constants a and b. Okay, so differentiating with respect to x, we get 1 by a plus 1 by b dy by dx equal to 0, or we can write dy by dx equal minus b upon a. अब two arbitrary constant है, that means we have to differentiate it twice. So differentiating with respect to x, we get d2y by dx square equals to 0. Okay, इसके पहले भी एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन यही आया था हमारे पास, d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ओके, सो जो भी आज हमने पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस फॉर यू. फर्स्ट वन इज फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y ट्रिपल डैश, ये y ट्रिपल डैश मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, y डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y डैश इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. So y triple dash whole square plus y dash whole cube plus y dash whole raised to 4 minus y equals to 0. Second question is verify that the function y minus cos y equal x is the solution of differential equation y sin y plus cos y plus x into y dash equal to 1. आपको फाइंड करना, चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. Next one is form the differential equation of family of ellipses having foci on y-axis and center at origin. हमको differential equation form करना है family of ellipses के लिए. आपको पता होना चाहिए standard form ellipse के equation का, और ये conditions आपको given है. focus जो है y-axis लेना है, center at origin. First you have to write the standard equation of ellipse, then according to number of arbitrary constants you have to differentiate and find the differential equation. Similarly, form the differential equation of family of circles having center on y-axis and radius 3 units. इसको भी आप इजीली कर सकते हैं. फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले फाइंड करिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, एंड देन जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप डिफ्रेंशिएट करें, एलिमिनेट करें आर्बिट्री कांस्टेंट्स को, देन यू विल हैव द डिफरेंशियल इक्वेशन.